As I make this video, it's 3 a.m. right now. And the reason I started making this video at 3 a.m. is because I was thinking about this and I thought I should make a video about it. So yeah, I gave CUT twice. The first time I scored 612 and the second time I scored 632. And this kind of frustrates me, of course, because इतने साल बाद, like एक साल बाद तुम एक एग्ज़ाम वापस से दो and you literally score like 20 marks above. It's kind of frustrating to me. It's kind of frustrating to anyone who gives an exam after an year and he still scores just a little more than he did last time. पहली बात तो CUT देने की नौबत सेकेंड टाइम इसलिए आई क्योंकि जब फर्स्ट टाइम मेरा इंग्लिश ऑनर्स के थ्रू राजधानी कॉलेज में हो गया था, साउथ कैंपस. बट उसके बाद फिर लाइक मैंने देखा नहीं सी पोर्टल क्योंकि हमने फ्रीज़ करा था एंड फ्रीज़ हुआ नहीं, पता नहीं कुछ तो ग्लिच हो गया. एंड उसके बाद वो चीज़ पर लाइक मेरा अपग्रेड हो गया RLA में, रामलाल आनंद में, फॉर इंग्लिश ऑनर्स ऑफ कोर्स. एंड हमने देखा नहीं तो ऑफकोर्स यू नीड टू पे द फीस डिफरेंस ऑफ कोर्स. तो 2000 का जो फीस नहीं पे कर पाया हम टाइम पे, तो पोर्टल बंद हो गया एंड मेरा एडमिशन कैंसिल हो गया. ऑफ कोर्स मेरे को लगा था कि लाइक अब मेरा कॉलेज लाइफ स्टार्ट हो गया. आई स्टार्टेड डूइंग ऑल माई स्टफ. आई एम अ राइटर बाय पैशन. आई स्टार्टेड राइटिंग माई बुक. आई स्टार्टेड अटेंडिंग ऑल माई क्लासेस. आई स्टार्टेड डूइंग taking part in the music society. But then it all went to shit because it all went down because I kinda messed up, I guess, or maybe the glitch messed me up on the portal. And then I gave CUT again after a whole year. I stayed in Delhi. I didn't come back to my home city. I stayed in Delhi. I went to anime events. I did cosplays. I had a lot of fun. And then I came back to my home in Feb and I started preparing for it. And I did prepare pretty well, I guess I would say. I underlined everything. I memorized everything. I did everything I could to score good. And I still scored 20 plus. Like, अगर लास्ट टाइम से कंपेयर करें तो आई स्कोर्ड 20 प्लस मार्क्स. जब मैं एग्ज़ाम देने बैठा एंड आई स्टार्टेड गोइंग थ्रू क्वेश्चंस, आई वाज लाइक आई डोंट नो. लाइक आई वाज कॉन्फिडेंट दैट आई वुड डू गुड. बट जब मैंने फर्स्ट ही कुछ क्वेश्चंस देखे, मेरा कॉन्फिडेंस बहुत गंदा डाउन चला गया. फर्स्ट कुछ सेकेंड्स में, फर्स्ट कुछ मिनट्स में माई कॉन्फिडेंस broke down and I could not believe that I worked so hard for this and now I'm going to deal with this. But well, जब मैं एग्ज़ाम देके बाहर निकला, I thought I would maybe score around 200 in all subjects because I kind of did well. But the normalization hit me. Of course, geography में इतना अच्छा नहीं कर पाया मैं, but मैंने दूसरे subjects में अच्छा करा था. But then I still got less marks in them. But yeah. एंड अब CSS का फेज़ 2 स्टार्ट होने वाला है DU यूनिवर्सिटी के लिए. एंड लेट्स सी व्हाट हैपन्स. आई एम प्रीटी श्योर आई विल गेट अ गुड कॉलेज अगैन, इंग्लिश ऑनर्स के लिए, जस्ट लाइक लास्ट टाइम. बट स्टिल इट काइंड ऑफ फ्रस्ट्रेट्स मी दैट आई कुडंट स्कोर दैट गुड विच आई फेल्ट आई वुड. बट एट द सेम टाइम, last time in my boards exam I scored around 50 to 60 marks in history out of 100, and that kind of bugged me. And history of course scared me to death, and I took the same subject in CUET. I took it on ego. I wanted to see कि मैं history में कितना अच्छा कर सकता है if I actually log in. And history में CUET में I scored around 92% percentile. So at least I got to prove myself that if I try I can get good in something. Even though I could not score well in CUET, I got to know that if I focus on one thing and if I'm weak in it, I can actually score well. And I'm saying this because as someone who has always scored average in almost all classes, like I have never scored less than 75 and more than 85. So as a person like that and someone who did so bad in history, scoring good in that same subject feels good to me. And अब नया सेशन स्टार्ट होने वाला है एंड फर्स्ट ईयर स्टार्ट होगा मेरा वापस से इंग्लिश ऑनर्स. होपफुली आई गेट इट अगैन एंड I'll record everything and everything I do and everywhere I go and everything I learn, my journey on this YouTube channel. So yeah, it's a journey and it might have a sad starting, but I think it's my responsibility to make it a good ending. Over and out.